Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Zainab Umar, and the topic of my presentation is refraction of light. So the main learning objectives are we'll be discussing the definition of refraction of light. We'll be discussing the optical density, refractive index, the phenomena of total internal reflection, the laws of refraction, and the phenomena of dispersion. In this picture, we see immersed in water and it looks like it's bent. This distorted image is because of the refraction of light. So what is refraction of light? Refraction of light is the change in direction of light when it passes from one transparent medium into another transparent medium of different optical density, and due to which the velocity of light changes. In this first picture, if we consider light as wave, so this is the incident wave and this is the refracted wave. And these lines are wave fronts. So this part of the wave front, which faces the second medium first, it changes the direction. It receives it changes the direction because the light or the speed of light of this wavefront decreases, and it's bent slightly towards the normal. Whereas this part of the wavefront, it continues its path, and as soon as it enters the other medium, it follows the medium of this first part of the wavefront. In this figure, we consider light as the form of a ray. This is the incident ray, this is the refracted ray, and this is normal. So this incident ray is making an angle with the normal, where normal is the line perpendicular to the medium, and this is the angle which the refracted ray is making with the normal. So let's discuss the effects of refraction in nature. Number one is our eyes. Our eyes use this refraction to interpret light. What happens is that the light enters the cornea, then the lens, and they're refracted towards the retina. And hence the image is formed at a precise point. This image is transmitted through the optic nerve to brain. Let's consider that this is the object and the rays from above the object are coming from here to the cornea, they're entering the cornea, then the lens, and they are bent towards the normal, and they form the image here on the retina. And the light rays from below the object are coming from here, they enter the cornea, then the lens, they're bent towards the normal, and they make the image here. And because we all know that the tears in our eyes, they also have some refractive properties, and when we get the teary eyes, this is why we get the blurry vision when the eyes are teary. This is the real-world example of fish hunting. The heron must use the refractive principle to determine where the fish is located before making the strike. The heron can accurately determine where to strike by recognizing that the fish is actually located at a point different what the eyes actually tells us. Because the apparent and the real images are different, when the object is dispersed in an optically dense medium, the image is slightly displaced and it's less dense than the actual object. The third one is bending the light rays, the sun rays. So we all know that before the sun actually rises, हमें उसका image पहले नजर आ जाता है. We know that when we see that the sun is rising, sun अभी तक rise नहीं हुआ होता. Why this happens? This happens because the air is the optical density of air is less than the optical density of it's more than the optical density of vacuum. So when the sun rays are emerging from the sun, they're entering from the vacuum into the air, the direction of the light changes towards the normal. And because of that, the path of the sunlight, the sun rays changes, and this bending of the light rays making the sun visible through refraction. The observer can see the sun before the sunrise actually happens. So this is another optical illusion. We have often seen the image of water on the roads or on the deserts. This also happens because of the phenomena of refraction. What happens is that the sun shines on the road, and what it does it makes the air above the road, just above the road, it makes it hotter. तो नीचे वाली air is hotter than the air above it. ठीक है, तो colder air और नीचे is hotter air. तो what happens is जब sky से sun rays आ रही हैं, वो refract करेंगी from the colder air to the hotter air because of the difference of the density, and the rays are refracted.
ठीक है. सो वो जो हम जो एक्चुअली सीम्स टू बी वाटर ऑन द रोड इज द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्काई विच हैज बीन रिफ्रैक्टेड एज इट passes through the hot air above the road. Then the rainbow formation is also because of the refraction and reflection of sunlight from the droplets of water in the air. This can happen after the rainstorm or the misty conditions, but also close to the waterfalls and fountains. अब जो डिस्पर्स करती है लाइट वो एक अदर फिनोमेना है विच विल डिस्कस लेटर, ठीक है, कि डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं और वेवलेंथ्स के अकॉर्डिंगली दे चेंज द एंगल्स जो होते हैं वो इनके डिफरेंट होते हैं. जिस तरह रेड लाइट विच हैज द हायर डेंसिटी, इसकी बेंडिंग कम होगी एज कंपेयर टू द वॉयलेट विच हैज लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसकी विच हैज द लोअर वेवलेंथ सॉरी, और इसकी बेंडिंग जो है वो ज्यादा होगी. तो अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं कि रिफ्रैक्शन इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम बिकॉज ऑफ द डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज. सो व्हाट इज ऑप्टिकल डेंसिटी? The extent to which an optically dense medium bends the transmitted light rays towards or away from the normal is called the optical density. ठीक है, what kind of mediums are there? There are rarer medium which have lower refractive index and denser medium which have higher refractive index. Speed of light जो है वो किस में ज्यादा होगी? रेयर मीडियम के अंदर, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो क्या है? कम है, ठीक है, एज कंपेयर टू द मीडियम विच हैज हायर डेंसिटी. सो एक तो हमारे पास होगी ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करी है. व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इट इज बेसिकली अ रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन टू मीडियम्स. इफ यू कंसिडर द फर्स्ट मीडियम एज वैक्यूम, तो द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम over velocity of light in medium is the absolute refractive index, and it can be measured by using a refractometer. अगर हम पहले मीडियम को लेंगे एयर, तो द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर over velocity of light in medium is the refractive index. These are a few examples of refractive index of different mediums. Air has a refractive index of 1. Water including aqueous has a refractive index of 1.33. Cornea is 1.37. Crystalline lens is 1.38 to 1.406. Crown glass is 1.52. Flint glass is 1.6. And diamond has the highest refractive index of 2.5. अभी important क्यों है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंट होना इससे इंपॉर्टेंट है. लेट्स कंसिडर 3 मीडियम्स, वाटर विद एयर, ग्लास विद एयर एंड डायमंड विद एयर. इसमें सबसे ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है? डायमंड की है. तो द बेंडिंग ऑफ लाइट रेस किसके अंदर सबसे ज्यादा होगी? डायमंड के अंदर होगी. क्यों होगी? बिकॉज इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो उतनी ही हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट भी कम होगी, जिसकी वजह से बेंडिंग ऑफ लाइट डायमंड में ज्यादा है. So this is a glass slab, parallel sided glass slab. इसमें क्या है? This is the emergent ray, this is the refracted ray, sorry, this is the incident ray, this is the refracted ray, and this is the emergent ray. So the refracted ray and the emergent ray, they lie parallel to each other. The only thing is that the emergent ray is slightly displaced. अब क्या जो लाइट हमारी इंसिडेंट रे है, क्या वो पूरी की पूरी रिफ्रैक्ट कर जाती है? नो, इट डजंट रिफ्रैक्ट 100%. ठीक है, इसमें से कुछ जो है रिफ्लेक्ट करती है. ठीक है, some reflection occurs at every interface even though most of the incident light passes onwards by refraction. Example ली हुई हमने of a lens or a window with the refractive index of 1.5 in air. It reflects 4% of the light from the interior surface and transmit the remaining 96% to the posterior surface, where a further 4% is reflected so that the lens transmit only 92.16%. यही प्रिंसिपल हम यूज करते हैं इन द टीचिंग मिरर ऑफ एन इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोप. So we use a sheet of glass as an image splitter. Most of the light is refracted across the glass, जो हमें examiner's eye को नजर आता है image, while some part is reflected, जो कि observer को नजर आता है. So the image to the observer is slightly dimmer, but examiner को जो है वो refraction से आ रहा है. ठीक है, but the observer is also able to see because of the reflection. Let us again review this picture. This may we have an incident ray making an angle of incidence with the normal, a refracted ray making an angle of refraction with the normal. This is N2, the refractive index of medium 1 and the refractive index of medium 2. अब इसमें तो हमारे पास लाइट जो है वो एक एंगल के ऊपर आ रही है, इसीलिए वो
डिस्प्लेस हो रही है टूवर्ड्स द नॉर्मल. व्हाट हैपन्स अगर लाइट रेज परपेंडिकुलर टू द मीडियम, क्या ये चेंज होगी? नो, इट विल नॉट, बिकॉज मैंने आपको जो बताया था कि वेव फ्रंट्स होती हैं, जो वेव फ्रंट का एक पार्ट है जब वो रेजिस्टेंस फेस करेगा तो वो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, क्योंकि ये आई ही परपेंडिकुलर रही है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इसमें चेंज होगी, लेकिन इसमें डायरेक्शन ऑफ लाइट नहीं चेंज होगी. Let's discuss the laws of refraction. So like the law of reflection, the incident ray, the refracted ray and the normal, they all lie in the same plane. This is the first law of refraction. The second law is the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction. Snell say that it is constant for a particular part of the medium in contact. अगर हमने एयर और ग्लास लिया है तो दो मीडियम्स तो सेम है, उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी सेम है. ठीक है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम जितना चेंज करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी उतना ही चेंज होगा, बट इट विल रिमेन कांस्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द मीडियम. The constant is denoted by the letter n and is called the refractive index of medium 2, in which the refracted ray lies, and with respect to medium 1 in which the incident ray lies. ठीक है, so n1 sine of angle of incidence is equal to n2 sine of angle of refraction. n1 क्या है? इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ मीडियम 1 है, n2 इज इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ मीडियम 2, और एंगल 1 एंगल 2 इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्रैक्शन एंगल. Now let's discuss the refraction of light at a curved surface. It also obeys the Snell's law. इसमें हमने दोनों मीडियम्स की ऑप्टिकल डेंसिटी ऑपोजिट कर देंगे. इन फिगर ए n1 इज लेस देन n2. अगर n1 इज एयर तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? कम है कॉर्निया से. तो व्हाट विल हैपन? द रेज विल कन्वर्ज. इन फिगर बी n2 इज ग्रेटर देन n1 इज ग्रेटर देन n2. n1 हमने क्या लिया है? ग्लास लिया है. n2 इज एयर. तो व्हाट विल हैपन? The light rays will diverge. और रिफ्रैक्टिव पावर हम इनकी कैसे कैलकुलेट करेंगे? रिफ्रैक्टिव पावर, वर्जेंस पावर ऑफ अ कर्व सरफेस इज गिवन बाय सरफेस पावर इज इक्वल टू n2 minus n1 over r. r क्या है? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस इन मीटर्स अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन. सरफेस पावर क्या होती है? कन्वर्जिंग लेंसेज के लिए क्या होती है? पॉजिटिव होती है, और डाइवर्जिंग लेंसेज के लिए, डाइवर्जिंग सर्फेसेस के लिए नेगेटिव होती है. Interior surface of cornea is an example of a curved refracting surface, and its power accounts for most of the refractive power of the eye. So up till now we have been discussing कि light rays जो enter होनी है air से denser medium में, तो क्या होगा? वो they are bending towards the normal. What happens when the light rays are entering from denser medium to the rarer medium? फिर क्या होगा कि angle of incidence would be less than angle of refraction. The light rays will bend away from the normal. यहाँ पे देखिए, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. इंसिडेंट रे यहां से आ रही है, एंड रिफ्रैक्टेड रे में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लार्जर बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज कर जाएगी. सो एंगल ऑफ एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आल्सो इंक्रीजेस. ठीक है, एंगल ऑफ यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, ये ऐसे ही चली जाएगी. यहाँ पे 15 है तो ये 20 हो गया, ये 30 है तो ये 42 हो गया, ये 45 है तो ये 70 हो गया. So at particular angle of incidence, angle of refraction would be 90 degrees. What is this angle called? Critical angle. The critical angle is defined as the angle of incidence that provide an angle of refraction of 90 degrees. अगर इससे भी beyond करेंगे तो क्या होगा हमारे पास? Total internal reflection होगी. If the incident ray is increased beyond the critical angle, the light is no longer refracted. Instead, it is reflected back inside the medium. This is called total internal रिफ्लेक्शन. सो हमारे पास कंडीशंस क्या हो गई? कंडीशन इज नंबर 1 इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन v1 इज लेस देन v2. ठीक है, एंड n1 इज ग्रेटर देन n2. critical angle is defined when the angle of incidence is 90 degree to the normal, and total internal reflection occurs when the angle of incidence is greater than the critical angle. बिलाल, एक छोटी सी मैंने एक वीडियो क्लिप ऐड की है. ये आपके पावर पॉइंट में नहीं चलाएंगे? पॉइंटर खत्म करें सकें.
पॉइंटर खत्म करें ना सर कह रहे हैं। आवाज नहीं चाहिए, नहीं आवाज इसमें है ही नहीं, रहने दें। तो ठीक है, वो कर्सर आपको इसी में प्ले करना है, इसी में प्ले कर दें, फाइन। So he has placed a glass slab and a projector. तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीजिंग, उसके साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है इट विल इंक्रीज। This is where the angle of this is the critical angle is achieved and total internal reflection हो गई। फिर आगे जैसे वो इंक्रीज करेंगे तो वो एंगल इंक्रीज करेगा। Okay, total internal reflection also occurs at the ear cornea interface. This is why it prevents the visualization of the anterior chamber angle and the peripheral retina. So this is the incident light. इधर आप देखें कि the yellow lines they show the total internal reflection occurring within the cornea. ठीक है, जो और pathways हैं, रिफ्लेक्शन हो रही है, थोड़ी रिफ्लेक्शन हो रही है, वो स्कैटर कर जाएगी लाइट। यहाँ से incident ray of light on the limbus, and this is the total internal reflection occurring within the cornea. So how do we overcome this problem? We overcome this problem by using a gonioscopic lens. ठीक है, gonioscopic lens में क्या होता है? It has a higher refractive index than the cornea. तो लाइट जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट कर रही थी वो क्या कर जाएगी? रिफ्रैक्ट कर जाएगी। ठीक है, एंड देन वील बी एबल टू व्यू द इंटीरियर चैम्बर एंगल। We also use the 3-mirror contact lens for viewing the peripheral retina. This central one is used to view the posterior pole. The 73-degree mirror is used to view the equator. The 67 one is used to view the ora serrata, and the 59-degree mirror is used to view the iridocorneal angle. So can you tell me which type of illumination is depicted in this picture? स्क्लेरोटिक स्कैटर। ठीक है, स्क्लेरोटिक स्कैटर हम क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं? सबसे पहले फर्स्ट वी पुट द मैग्निफिकेशन ऑन लो, वी सेट द बीम विड्थ टू 1 to 2 millimeters, वी ब्राइटनेस हम हाई कर देंगे। ठीक है, वील सेट अपार्ट द इल्यूमिनेशन सिस्टम एंड ऑब्जर्वर सिस्टम एट 45 degrees, देन वी डू द डीकपलिंग, वी शॉर्टन द बीम हाइट टू दैट ऑफ द लिम्बस। तो क्या होगा, टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट करेगी तो एक ग्लो प्रोड्यूस होगा विद इन बिहाइंड द कॉर्निया, जिसकी वजह से वील बी एबल टू सी एनी इरेगुलरिटीज ऑन द कॉर्निया, एनी स्कार्स, फॉरेन बॉडीज और कॉर्नियल डिफेक्ट्स। आ रहा है लेकिन वो प्ले पे हो नहीं रही है प्ले। हाँ ठीक है, वॉल्यूम नहीं आ रहा। Here. Of the cornea, then move the joystick until the tear debris is in focus. We then need to decouple the slit lamp. To decouple a high strike slit lamp, you twist this knob on the illumination system anti-clockwise to loosen it. This will allow the beam to be decoupled onto the temporal edge of the cornea as shown. Then shorten the beam height so that all the light is in contact with the limbus, as extra light can be scattered by the sclera, reducing visibility. The light is totally internally reflected in a healthy cornea and exit at the limbus, creating a halo effect, which can be seen here. If the cornea would have any abnormalities, they would scatter the light, causing a white area to be seen at its location.
So this phenomenon of total internal reflection is also being used in the optical fibers. What are optical fibers? These are thin flexible glass rods used for carrying light by total internal reflection from one end to another. इसमें what do we do is जो inner core जो होती है that is made up of a material which has a high refractive index, then the outer cladding जिसकी refractive index जो है वो low होती है. So the light is totally internally reflected, and this is how we can transmit light from one point to the longer distances, and light wouldn't escape. The last one is dispersion of light. Light of shorter wavelengths is deviated more than the longer wavelength. जैसे मैंने आपको बताया, the refractive index of any medium differs slightly for light of different wavelengths. And the angle formed between the red and the blue light indicates the dispersive power of the material, of the medium. This power is not related to the refractive index of the material. अब हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से द रेनबो फॉर्मेशन अकर्स, ठीक है. वी हैव ऑफन सीन अ सेकंड रेनबो, ठीक है, विद द प्राइमरी रेनबो. व्हाई इट अकर्स? इट अकर्स बिकॉज ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है. लेकिन होता क्या है, इसमें ऑपोजिट होती है. व्हाई द ऑपोजिट कलर्स आर विजिबल? बिकॉज द वायलेट, द कलर मेकिंग द स्मॉलेस्ट एंगल टू द होराइजन इज रिसीव्ड फ्रॉम द lower drops, while red making the greatest angle with the horizon is received from the highest drop. Thus the red on the outside of the primary rainbow. What happens in the secondary rainbow? Secondary rainbow is formed by the rays that have gone total internal reflection twice within the raindrops, and the colors are seen in the reverse order. Violet is on the outside of the rainbow. These are the references that I have used. Thank you. with videos, so it improves the retention. जो आप वीडियो पे देखते हैं वो ज़्यादा देर याद रहता है as compared to text only. Photographs are in between. So ट्रैफिक लाइट में रेड और ग्रीन, इनमें से कौन सी लाइट जो है वो कम डेविएट करेगी एंड विच लाइट विल डेविएट मोर? रेड कम डेविएट करेगी, क्यों? ठीक है. सो हायर द वेवलेंथ, द स्मॉलर द वेवलेंथ, उसकी बेंडिंग ज़्यादा होगी. सो रेड लाइट आपको दूर से नज़र आए, इसलिए रेड पे स्टॉप कर रहे हैं, दूर से पता चल जाए भाई स्टॉप करना है. Coming to the eye, you see the practical examples of refraction. You see why the corneal power is more than the lens power. The optical power of the cornea. So the refractive index between at the corneal interface is between air and cornea. So what is the refractive index of the air? 1. And of the cornea? 1.3. So this is a big difference. That's why most of the refraction occurs at the anterior surface of the cornea. Now the posterior surface of the cornea is concave and negative refraction occurs, but it is not significant. Why? The refractive index, the difference between the two refractive indices is not that pronounced. Cornea is a refractive index of 1.37, and anterior aqueous is 1.3. So there is very slight difference. That's why the negative refraction is not that pronounced. Now, in the you have not told the refractive index of vitreous. What is the difference? Almost same as that of aqueous. Okay. So in the lens, there are cortex and nucleus. So if the nucleus becomes more opaque or with age, the nucleus sclerosis occurs. Then what happens? Myopic shift. Why? The refractive index increases, and so the converging power of the lens increases. Now the opposite occurs if the cortex is opacified.
These are similarly, what are the changes in diabetic cataract? Similar changes. When the refractive index of the lens matter changes because of the diabetes, then the refractive status changes. That's why we ask the patient to control the diabetes and then we do the refraction, right? Otherwise, blood sugar is 300 and you do the refraction. After some time, patient controls the diabetes and comes and say the glasses are not working well. Okay, so another example is practical example is when you are applying sutures on the sclera, let's say for squint surgery or retinal detachment. If you have a lot of water, there is a pool of water on the operation site, so your depth perception is changed. Your needle is not, maybe it penetrates the sclera more. So you always dry the field before applying the suture, whether it's squint or retinal detachment encircling procedure, so that there is no reflection of the light, right? And you see, in vitreous hemorrhage, or let's say if you change the vitreous after pars plana vitrectomy, you inject silicone oil. So what happens? Refractive index changes. Now, how will you know what is the, let's say, you want to do biometry? So it is better to have biometry before doing pars plana vitrectomy, so that you know what is the exact power of the lens. Otherwise, you can manipulate the gates on the biometer A scan, and then you can calculate. Uh, so when you remove the silicone oil, again the refractive index changes and the refraction will be changed. So these are some practical points where you encounter reflection uh, and refraction. So, sir, any point? तुमने भी बोला है. बाकी आपने total address reflection frequency application is rotoscopic. Okay, that interface is replaced by the lens or main total reflection of to utilize that and then you come to बाकी रिफ्लेक्शन जगह जगह आपको जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें आपको मिलेगी. उसके अलावा जो आई के जो रिसर्च मीडियम है जिस तरह से डिस्कस हुआ है रिफ्लेक्शन एवरी और रिफ्लेक्शन चेंज होती है डेंसिटी के साथ. जैसे हाइपरग्लाइसीमिया में क्या होगा? इम्बाइब्रेशन होती है तो इंक्रीज वाटर इंक्रीज होता है, ठीक है ना? तो इंक्रीज होने से क्या होगा? I think it was a very good presentation altogether. Especially, I would like to encourage you all to incorporate more videos in your presentations. उससे learning काफी बेहतर हो जाती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल जो ये स्क्लेरोटिक स्कैटर की जो वीडियो दिखाई है उन्होंने, आप उस कॉन्सेप्ट को जितना मर्जी टेक्स्ट बुक से पढ़ लें, आपको फिर भी कोई ना कोई एम्बिग्विटी रह जाती है उसके अंदर कि ये एग्जैक्टली करना कैसे है सिस्टम के ऊपर. तो व्हेन यू सी दीज वीडियोस आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाते हैं. और आई वुड ऑल्सो इंकरेज यू ऑल कि आप लोग जाके नीचे, तो जब आप लोगों को टाइम मिलता है, फ्री हो जाते हैं, तो इसको प्रैक्टिस करके देखें, डीकपलिंग कैसे करनी है, किसी सीनियर को एंगेज करें ताकि आप लोगों को पता चले कि इसकी एक्चुअल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है अपार्ट फ्रॉम जस्ट वीडियो एंड थियरी के अंदर. इसी को मैं बताऊं कि स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन टेक्निक इंटरमीडिएट मॉड्यूल में एक पूरा